Now this is Mr. A and this is Mr. B. Please guys, no questions right now. Just focus over here. Mr. A का आधार कार्ड, पैन कार्ड, income tax returns, everything is with the bank. So bank knows who is Mr. A, where Mr. A lives, right, and what he do. Similarly for Mr. B as well. Aadhaar card, PAN card, all the details, KYC details when you start an account with the bank, right? Now, when Mr. A sends money to Mr. B, it is not directly sent. It is sent via this bank. So bank is playing intermediary over here. Who approves this transaction? Bank. Who keeps the ledger? Ledger means record of this transaction. It's the bank. So all the data is with one bank only. जैसे आपका SBI है तो SBI के पास data है. If you have PNB bank, तो entire data would be with PNB bank, right? So bank can see your details. So bank can any point of time see, check, validate or cancel anything they want. They can see your details. They can cancel your transaction as well, right? Then what is the role of RBI? RBI is also seeing this transaction, guys. If Mr. A is a terrorist, RBI can any point of time spot him and cancel the transaction. Means ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा B तक पहुंच ही जाए. It is not mandatory कि आपका पैसा B तक पहुंच ही जाएगा. Right? Now, RBI can cancel your transaction, can see your transaction. And guys, those who are not aware, every month there is a report that all the banks they send to their headquarters. I mean SBI की जितनी branches हैं वो SBI के headquarter में भेजते हैं. That report is then sent to RBI. Means bank and RBI both are seeing these transactions and they can take any action on this transaction. Then comes the finance ministry. फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चाहे तो किसी की भी बैंक अकाउंट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं. मीन्स दे कैन ऑल्सो सी ऑल द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन A and B, right? Similarly, international bodies as well can see with the permission of RBI, with the permission of finance ministry. If I give you a very practical example, guys, I have some acquaintances, some friends who are working in bank. So, we talk to each other generally. So one of time when we used to in our college days, so one of my friend he told me कि प्रणय मैं यहाँ बैठे बैठे अपने सारे लोगों की ट्रांजेक्शन्स देख सकता हूँ. Even I can see where my girlfriend is eating food, where she is traveling everywhere. Means they can stalk anybody, guys. Means your transaction can be stalked, can be seen by the employees of the bank. बाकी तो छोड़ो, जो बैंक के एम्प्लॉई है उसको पता है ए कहाँ घूम रहा है, कहाँ खा रहा है, कितनी सैलरी, एवरीथिंग. सो दिस इज मनी ट्रांसफर जर्नली टेक्स प्लेस. मतलब है इफ मिस्टर अमृत इज सेंडिंग मनी टू मी, तो मुझे डायरेक्टली नहीं आती है. इट कम्स वाया चक्रवर्ती, इट कम्स वाया सुनील, राइट, सॉरी, इट कम्स वाया बैंक टू मी. मतलब वो बाया करके आती है, इट्स नॉट डायरेक्ट. Now coming to Bitcoin, how Bitcoin is different over here, guys. Now over here there is a number. यहाँ पे Mr. A और Mr. B गायब है. Now guys, I want you to focus over here. Again, it's very important. See, A and B is very transparent. Means यहाँ पे ना आपकी real identity nobody knows first of all. तो A के पास एक कोड है. This is the code of Mr. A and this is the code of Mr. B. There is no Aadhaar card, PAN card, nothing. Just one single code. That code is also very long, guys. ये हो गया पहली चीज़. अब मिस्टर इस XYZ ने अगर यहाँ पे पैसा भेजना है, right? So he sent this Bitcoin to him, right? Now this is the first step of the transaction. All right, this is clear. So यहाँ पे there is no Mr. A, Mr. B. There is Mr. XXYY and Mr. GDX. And Mr. भी नहीं, Mrs. भी हो सकता है, right? Now there is no way over here you can get to know who is this and who is this, because these are codes. That is why the term encryption is used. Cryptography means यहाँ पे आपको पता ही नहीं लग रहा है कौन है. Now who are these people, guys? Means there are so many question marks over here. So these are called as miners. Guys, it's very important. Becoming a miner is a career itself, right? Now ये सारे के सारे लोग यहाँ बैठे होंगे
right, with their computers, right, what they will do, इन सबको एट ए टाइम एक पजल आएगी सॉल्व करने को, मैथमेटिकल पजल। जो भी इन सब में से ये पजल सबसे पहले सॉल्व करेगा, he will get a chance, a random chance, I'm saying, out of all, right? These are people sitting throughout the world. He will get a chance to approve this transaction. So this person doesn't know him. ये जो इंसान है, this guy, he doesn't know Mr. XXYY or GD HR. कुछ नहीं पता कौन कौन है. This guy is also random, so they don't know him, right? Mr. A and Mr. B ये भी नहीं जानते हैं. This person will approve this transaction, guys. ये transaction, he will approve this. And in a return, इसको क्या मिलेगा? But he will get in return 6 bitcoins gift. तो यहाँ पे बैंक का काम किसने किया? These miners are doing the role of the bank. There is no bank, no RBI, no finance ministry, nothing. There is a random person who is approving this transaction. So this is called as miner. And एक बिटकॉइन की कीमत है अभी 96 लाख रुपी in Indian terms. आगे पीछे हो सकता है, it's around 96 lakh rupee, 1 bitcoin. He will get 6 bitcoins. It's a good profession, right? So no monetary policy, no fiscal policy, कोई झंझट नहीं transactions का, no one can cancel this transaction and no one will ever get to know पैसा कहाँ से कहाँ चला गया. I hope you all are with me. We are coming now again to this. Now, how this technology works into detail. Out of these people, how they will get a chance. First of all, this is Mr. A, Mr. B. Now, I want you to focus. XY, Mr. This XY, nobody knows who is. He is sending a Bitcoin to Mr. GD. Nobody know who he is. No PAN card, no Aadhaar card. Everything is anonymous, right? So that is why it is called as cryptocurrency. Crypto means encrypted. Encrypted आपके WhatsApp messages are encrypted. ये ऐसा है, आपने कोई राजी मूवी देखी होगी या कोई स्पाई मूवी, एंड मोर्स कोड आपने सुना होगा. मोर्स कोड, इट इज़ अ स्पाई लैंग्वेज गाइस, जो मैं आपसे बात करने के लिए यूज़ करूँगा. ओनली मी एंड यू कैन अंडरस्टैंड, नोबडी एल्स कैन, बिकॉज हमें उसको डिसाइफर करना पड़ता है. सो ये जैसे ही मिस्टर XY ने मिस्टर GD को बिटकॉइन भेजा, एक ब्लॉक तैयार हो गया. ब्लॉक मीन्स एक ट्रांजैक्शन रेडी होगी, एंड दैट इज़ लॉक्ड गाइस. वो ब्लॉक लॉक होता है, जस्ट लाइक अ PDF. जस्ट इमेजिन इट एज अ PDF. आपने कुछ PDF देखे होंगे जिसमें पासवर्ड डालना पड़ता है. जैसे आपने आधार कार्ड कभी डाउनलोड किया होगा, यू नीड टू पुट अ पासवर्ड ओवर देयर. Only then you can access, otherwise nobody can, right? So whenever this transactions takes place, the first step that will take place over here, that it will get locked, right? But it's not approved yet. अभी तक approve नहीं हुई है. ये transaction होगी, approve नहीं हुई है. Now there are so many people sitting across the world. पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं. These are called as miners. इनका मोटिवेशन क्या है? What is motivation for these people? They get Bitcoin exchange of a single validation. एक single validation के against they earn Bitcoins. 1 Bitcoin 96 लाख, तो 6 Bitcoin मिलते हैं आजकल. पहले मिलते थे 12, उससे पहले और ज़्यादा. When it started, it was very easy. अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया माइनिंग करके. एक सिंगल लैपटॉप से माइनिंग हो जाती थी पहले, बिकॉज द पजल्स वर वेरी इजी टू सॉल्व. एंड हर ट्रांजैक्शन में पहले तो 24 या 36 बिटकॉइंस मिलते थे. धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीजिंग. नाउ व्हाट विल हैपन, it's a full-fledged profession. These people are professional computer engineers who know how to do it. ये आप लोग भी कर सकते हैं, but people are unaware in India, right? I will let you know how mining works. So ये सारे यहाँ बैठे होंगे, इनको ये दिखेगा, इनके सॉफ्टवेयर में पॉपअप आएगा नोटिफिकेशन कि XY ने यहाँ पैसा गया है, देयर इज़ अ ब्लॉक रेडी. हु विल वैलिडेट? सबके पास एक एक पजल जाएगी. हु सो एवर solve that puzzle first, he will get chosen, and this person will open the block. अपनी stamp लगाएगा. हाँ, it is done. Stamp is a just for analogy I am telling you कि ऐसा होगा. He will approve the block and that block will be sealed forever.
जैसे आपने आधार कार्ड का पासवर्ड लगा दिया, एक बार पासवर्ड लग गया, नो वन कैन एक्सेस दैट. सो वंस दिस ट्रांजैक्शन इज वैलिडेटेड, देन इट इज़ फॉर एवर डन. उसको कोई नहीं छेड़ सकता. एंड वंस इट्स डन, इस जो वैलिडेशन थी, जो वैलिडेशन की लेजर था, जैसे आपने पासबुक देखी होगी बैंक की, यू हैव अ पासबुक ऑफ बैंक, वो किसके पास होती है? आपके पास. और एसबीआई के पास मीन्स आपके बैंक के पास है. ओनली यू एंड योर बैंक हैज़ द पासबुक. दैट इज़ अ लेजर बेसिकली. बट ओवर हेयर दिस लेजर विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल द पीपल सिटिंग ओवर हेयर. इन सब के पास लेजर का व्हाट्सएप मतलब मैसेज चला जाएगा कि दिस इज़ द लेजर. मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन है ये सभी देख सकते हैं. बट यहाँ पे नो बडी गेट्स टू नो हु इज़ मिस्टर एक्स वाई एंड हु इज़ मिस्टर जी डी. इट इज़ एनोनिमस. एंड दिस लेजर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद ऑल दीज पीपल. एंड इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. एंड जो ब्लॉक यहाँ सबसे पहले बना था, दिस इज इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन गाइज. Now we are going to go deep into this, but I hope you will remember this thing. This was, I tried really to simplify this thing. I want to show you one more thing over here. See guys, so these are the ledgers. ये ऐसे ledgers बनते हैं. I hope you can see this. So ये hash number जाता है, ये miner. Who is the miner? Unknown. Nobody knows who is the miner. ये पैसा किसके पास गया? Nobody knows. But these are the transactions. And entire world can see this. ये ledgers distributed हैं. See, every minute a transaction is taking place over here. ये देखो. These are the transactions which are taking place. And these transactions are continuous. ये चलता ही रहता है ये process. Right? Nowadays, Bitcoin transactions are very common. ये देखो. These are the present live transactions which are taking place in Bitcoin. And nobody will ever get to know कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, because ledgers are so these are maintained in a language, that language is very difficult to decipher. So these are the live transactions which are taking place over here. Right now, coming back,